I welcome you all, beta, in this brand new session of chapter number 10, Budgetary Control. Okay. So in the last session, we have completed chapter number 9, Strategic Analysis of Operating Income. So first few minutes of revision will be there regarding that particular topic of chapter number 9, Strategic Analysis of Operating Income. Then we will move further towards the new chapter, that is chapter number 10, Budgetary Control. Okay. So two topics we have dealt with in the last session. The first topic is direct product profitability. The very first point in direct product profitability is they are applicable only and only to the retail sector. Okay, for manufacturing sector and service sector, we are having activity-based costing. We are having customer profitability statement. But for trading sector, we are not having any specialized accounting that can recover the overhead on a logical basis, and that too without incurring too much cost for its implementation and execution. So a new method has been evolved by General Electric Company of America known as direct product profitability. Can you please recall the 3-step beta? Don't communicate to me through the chat box. Just recall on your own. If I want to compute the direct product profitability, what are the 3 steps available to me? Rashmi Kamath, Seema Suresh, Shrivani, good evening, beta. Just recall what are those 3 steps that are required to compute direct product profitability. Okay, so the very first step is damn simple. It's computation of gross margin. It's computation of gross margin. It is very simple. Computation of gross margin is the difference between sale price minus purchase cost. Okay, can you please communicate to me with the purchase cost is significant in case of trading sector, or it will be an insignificant one? What do you say? Whether purchase cost will be a significant cost in trading sector, or it will be a insignificant cost in trading sector? Purchase cost. Definitely, it will be a very significant cost, beta. Normally account for 80 to 85% of the total costs that are incurred in this retail organization, because they are dealing mostly in branded product, and in branded product, margin of 10 to 15% are more than enough. Okay, so therefore, purchase cost is also contributing a significant portion. Along with, we have to properly derive a method so that we can find out who is our true winner product and who are our true loser product. Okay, and the second step will be consist of DPC, direct product cost, which consists of 3 costs: warehouse cost, transport cost, and it is store cost. Storage cost nahi tha beta, the word is store cost. So warehouse cost is basically related with centralized warehousing, which is purchasing the goods directly from the manufacturer, and thereafter it will distribute to the different stores located in India. The second will be the transportation cost. There are 3 types of transportation cost. Please communicate to me, beta, which type of transport cost will be covered in the transport cost, or all the transportation costs will be covered. The first point is from manufacturer place to the centralized warehousing, we are incurring the transportation cost. This is option number A for our easy communication. Then second point, from centralized warehousing to different store, this is again transportation cost will be incurred. And the third one, from store to the customer place, again transportation cost will be incurred. Whether all the 3 transportation costs will be covered under DPC or a combination of that. Please communicate with A, B, and C.
मोहनलाल बेटा गुड इवनिंग। जेटा थीश गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से। Which transportation cost will be covered in DPC? Okay, F per Shrivani, it's A and B. Seema Suresh, all of the options A, B, and C. Okay. What about other student beta? Mohanlal, Chitakesh, Aniket, Rashmi Kamath, Geeta Patel. Communicate beta. What's your view? Which type of transportation cost will be covered? If you can open that diagram na beta, which we have prepared in the last session, you can provide me the correct option with full confidence, है ना? तो जल्दी से एक बार वो डायग्राम आप निकालिए, आप मुझे बता पाएंगे बेटा। Shrivani has now changed its her answer, and she is now saying that okay, all the three costs will be covered. Okay. Just एक बार वो डायग्राम निकालिए बेटा, because till now I have not got even a single correct answer, है ना? So that diagram will provide you which transportation cost will be covered under DPC. Now I am getting the answer from Rashmi, from Geeta Patel, and both the answer are correct, beta. Rashmi and Geeta Patel, yes, beta. That's the transportation cost that is covered under the head DPC. It's only the transportation from warehouse to the store will be covered under DPC. अब वो चार्ट देखिएगा बेटा, तो उसमें क्लियर कट लिखा है, जो अपन ने चार्ट बनाया था सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग, फिर वो डिफरेंट स्टोर को जा रहा है, तो वहां पे अपन ने ट्रांसपोर्टेशन लिखा था। सो ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज वेयर हाउस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज विल बी कवर्ड अंडर डीपीसी। इवन आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख सकते हैं बेटा। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी सेंट्रलाइज वेयर हाउस से आप स्टोर में जा रहा था, डिफरेंट स्टोर में, थ्रू टू टाइप ऑफ वैन, नॉर्मल वैन एंड रेफ्रिजरेटेड वैन। कहां से? सेंट्रलाइज वेयर हाउस पे वो जा रहा था, कहां पे? टू द डिफरेंट स्टोर। नो बेटा सीमा सुरेश, इट विल बी ओनली एंड ओनली बी, दैट इज फ्रॉम सेंट्रलाइज वेयर हाउस टू द रिटेल स्टोर, है ना? इवन वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपन ने किया था लास्ट सेशन में, if you watch that question you will be able to gain more clarity on that. Okay, चलिए बेटा, now revision के साथ साथ एक question and answer round भी हो गया। चलिए, so now the next point will be if whether the DPP is to be calculated on per unit basis mandatorily. Can you please communicate beta whether DPP is to be calculated mandatorily on per unit in all the questions? वेरी गुड श्रीवानी बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, कीप इट अप। रश्मि कामत, यस करेक्ट आंसर है आपका भी बेटा, वेरी गुड। So it did not be necessarily on per unit basis. The logic will be whatever denomination in which we are selling our product, whatever denomination in which we are selling our product, that denomination, in that particular denomination, we have to find out the direct product profit. Okay, so it will be clearly gathered from the data sale price. Whatever denomination the sale price is given to us, that denomination we have to calculate the DPP, direct product profit per unit. Okay, very good beta. Geeta Patel, okay. And Bhaumik have also answered the same. Very good beta. Chali. So in the practical question which we have done, in that practical question we have been given three denomination. Denomination of per unit has been given, denomination of per carton has been given, and denomination of per cubic meter has been given. We have chosen the denomination per unit to express the direct product profit. Why? Because the sale price of all the product
are expressed on per unit basis. So step number one is a simple one because sale price and the purchase cost both are given on per unit basis. Okay. But the real problem arises when we are trying to calculate the DPC on per unit basis because some costs are given on per month, per cubic meter basis. Some costs are given on per trip basis. So definitely, first of all, per month per cubic meter cost will be converted into cost per cubic meter by multiplying the number of months the goods are stored in the warehouse and the store. Okay, so cost per cubic meter per month. मैं इसको लिख देता हूं बेटा, तो it will be much easier for you to understand what I am trying to say. देखिए, कुछ डिटेल हमारे पास थी कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ. सबसे पहले हम कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मंथ्स इन वेयर हाउस. और अगर हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस इन वेयर हाउस. बट दिस इज नॉट आवर डिनोमिनेशन, वी वांट द आंसर ऑन पर यूनिट बेसिस. तो अब जो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर है, नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट पर यूनिट by dividing this cost per cubic meter by number of units per cubic meter. और ये कैसे निकाला गया था बेटा उस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर ये निकाला गया था नंबर ऑफ कार्टन्स पर क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर कार्टन, है ना. इसको आप मेंशन कर दीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ वी आर कन्वर्टिंग दैट डेटा ऑफ कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पर मंथ इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, है ना. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा. इन द प्रीवियस सेशन वी आर नॉट रिटन. दिस विल बी मच हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ रिवीजन. ओके, by seeing this diagram you can easily recall all the concept of that particular question. No need to devote some extra time. ओके बेटा, नोट डाउन कर दिया आपने. नाउ अब आप लिखिए, एक और था द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या बेस था? मैं हमें दिया था कॉस्ट पर ट्रिप दिया था रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर में, एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस इनटू कॉस्ट पर यूनिट में. तो इसको हमने कवर किया था बाय डिवाइडिंग इट बाय कैरिंग वॉल्यूम ऑफ व्हीकल. If I am not wrong, in that particular case, the carrying volume of vehicle is in cubic meter, 64 cubic meter. Each carrying volume capacity is there. So by dividing the cost per trip with the carrying volume of fuel, we arrive at cost per cubic meter. Then it will be divided by same point, number of units per cubic meter. I'm not writing the formula because the same formula will apply to find out the number of units per cubic meter.
Okay, chaliye beta. Next topic we have discussed is regarding the manufacturing, not manufacturing, it's about value added and the non value added time. Okay, so I am preparing a diagram. You have to fill the detail there. Okay, this is receipt of order. Don't draw this diagram, this has already been given in the study material beta. इसको आप बोल दीजिए कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड, कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड, it is communication to production department, production completed, its production start, and it's delivered to customer. Now I am writing the location beta. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is E. Now I am providing you some terminology. You have to fill up in the same sequence A, B, C, and D. Okay, I am providing you some terminology. The first terminology I am providing to you is the receipt time. And one terminology I will also give you, EF. Okay. Second terminology I want to give is delivery time. Third, manufacturing cycle time. Fourth, waiting time. Fifth, cycle time. And sixth, manufacturing time. Okay, beta. So what you have to do? You have to communicate in 1, 2, 3, 4. It will be easy. Suppose you think that fourth number is related with point number A, so you will write 4. And suppose then as per you, it's the B point is point number 2, that is the delivery time. So आप इस way में communicate कीजिए in the number so that you can answer me in a very short manner, short time. Okay, तो चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताइए कौन सा टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है विदाउट लुकिंग एट द स्टडी मटेरियल. अगर वो देख लिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा. दिस इज जस्ट फॉर योर रिकॉल पर्पस. ओके, चलिए मुझे बताइए जल्दी से आप.
Okay, Bhaumik and Rashmi have given me the answer, but I'm waiting for more answer. Okay, I have got the answer from Shrivani also. Please communicate fast, beta. Okay, so the correct answer would be beta. A will be indicated by receipt time. This is known as receipt time. Okay, and B is known as waiting time. C is known as manufacturing time. And this is very important. E is known as manufacturing cycle time. Manufacturing cycle time. When the communication has been done to the production department and when it has been completed, the complete duration is known as manufacturing cycle time. This is known as delivery time. And this is known as cycle time. Can you please tell me beta, two other name of this point A and B? Some author communicate receipt time by other name and waiting time by other name. Can you please communicate me those names? Some authors use different names for the receipt time and the delivery time. Can you please communicate those names, beta? I have also requested you to solve the question of November 2019. November 2019 has some questions related to this topic in which the authors have used different terminology for this one. Waiting without waiting, only 2 or 3 answers have been received to me. I'm waiting for your answers. Yes, beta. Some author consider the receipt time as they indicate it by waiting time. And the waiting time is known as queue time as per their concept. So कुछ author इस receipt time को waiting time बोलते हैं and this waiting time is indicated by them as queue time. है ना? ये ध्यान रखिएगा बेटा, whenever do a question on the November 2019, November 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था related to this point. In that point, it has been covered the terminologies, although both the answer has been acceptable by the institute if the student assumes the receipt time is the waiting time and the waiting time and the queue time. In both the alternatives, student have been awarded full marks related to that one. Okay, chaliye beta. Now I am giving you a very small question based on the last session. After that, beta, we will start the new topic. Okay, so please write down. Waiting time, 2 hours. Inspection time, 3 hours.
storing time 1 hour, and processing time 4 hours. Calculate manufacturing cycle efficiency and percentage of value added time. चलिए इसी पॉइंट के साथ we will complete the revision of the last session. Seema Fresh, if the time permit, beta, in the case study session, definitely we can cover the case study given in the January edition. Okay, please remind me whenever the case studies session has been started. I think we are having 3 sessions, the last 3 sessions on case studies and case scenario. Definitely we will cover the question that has been given, published in January 23 Students Magazine. For the rest of the student beta, there are some questions given by the institute, fresh questions on the case studies. They are very good questions. I think approximately 5 to 7 questions have been given to you in that particular case session, published in January 2023 student newsletter. Please communicate the manufacturing cycle efficiency beta and the percentage of value added time. Last 1 minute beta to provide me the answer. Then we will start the solution and then finally we will start a new chapter. Yes, beta, it's 0.4 all the time except the processing time if the non-value added time. Okay, waiting time, inspection time, and storing time are considered as non-value added time, and the processing time, that is the time during which raw material is being actually converted into finished goods, is known as the processing time. ओके चलिए तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 10. गिव द हेडिंग इन योर कॉपी. चैप्टर नंबर 10. Budgetary control. Chapter number 10, budgetary control. Already you have heard this particular chapter
at intermediate level, beta. Can you please recall the content of those chapters? What are being taught at intermediate level regarding the budgetary control? Basically, that a particular intermediate level for the budgetary chapter is full about the practical question. You have been taught different types of budget, sales budget, production budget, purchase budget, and then you have been a numerical question regarding the fixed budget and the flexible budget. So there are n number of practical aspect, numerical aspect, I would say, of the budgeting chapter. But at final level, there is no single question which demands you to prepare different types of functional budget, such as sales budget or the production budget or the purchase budget. Even they are not demanding the fixed budget and the flexible budget. No. This particular chapter, budgetary control, is fully based on the strategic level of management. That is, whenever a budget is decided by the strategic level of management, what mindset, है ना, जो psychology होती है employee की, वो साइकोलॉजी को कैसे कवर करना है, दैट इज नोन एज दिस द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 10, बजटरी कंट्रोल. जब आप यहां पे देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट दिया है रिगार्डिंग द कंट्रोल मैकेनिज्म. देन दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बिहेवियरल एक्सपेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल. What are the behavioral aspect of budgetary control? This has been given to you. And this is the most important part of this chapter. Whenever you are preparing a budget, whenever you communicate a budget to your employees, whenever based on that budget, their performance will be measured, what will be the behavioral impact on the employees, that will be covered in this particular point. And the last point is known as beyond budgeting. Although not very popular in India, but this concept is the futuristic concept, although applied by many companies in the different countries, but definitely it is not the yet popularized in India, but definitely it's the future budgeting technique known as beyond budgeting. So basically, three main topics are covered in this particular chapter. The first one is control scheme. The second one is behavioral aspect of budgetary control. And the third point is beyond budgeting. Okay, beta? So just a formality, beta. Just read out the content of what do you mean by budgetary control in page number 2, and this diagrammatical explanation of what are the prerequisites of effective budgetary control. At final level, the question is not expected from the first initial 2 pages that regarding the definition of budgetary control. They are just to familiarize what do you mean by budgetary control by the institute. Okay, तो चलिए बेटा कुछ समय देता हूं. Hardly I am giving you 3 to 4 minutes to read out the content of page number 2 and page number 3 regarding the terminology budgetary control, and then we will start the very first topic that should be asked in the examination, is the control scheme available. Okay, चलिए 2 से 3 मिनट है बेटा आपके पास.
Last 1 minute, beta. Try to complete the content given in page number 3 also. That what are the prerequisite for budgetary control? Okay, beta. Seema, just wait a minute, beta. Okay, beta. Can I assume that each and every point written in page number 2 and 3 is clear to you? Okay. Now, this is the first topic we are starting, feedback and feed forward control. Please give the heading in your copy, beta. Feedback and feed forward control. Write down the first point. First of all, we will write down some points, beta, and then we will discuss what do you mean by feedback and feed forward control. We are having a small case study also on this particular topic, feedback and feed forward control. Okay, so please write down. Feedback and feed forward control are the two types of control scheme schemes. Write down second point. Both the control system, write down second point, both the control system may work together in the organization. But their functionality is quite different. But their functionality is quite different. Write down the third point. Feedback control system first detect the error. Feedback control system first detect the error and subsequently put efforts to rectify the same. While feed forward work as a preventive tool. चलिए बेटा, क्या क्या लिखा अपन ने इसमें? सबसे पहले हमने लिखा दे आर द टू कंट्रोल सिस्टम विच एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सेकेंड हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों में से कोई एक सिस्टम चूज करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई बोथ द सिस्टम इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो देयर वर्किंग इज क्वाइट डिफरेंट.
थर्ड पॉइंट में हमने एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि इज द डिफरेंस बिटवीन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम एंड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. Feedback control system basically works on first identify the error and thereafter take subsequent action to rectify that error. While feed forward control system is a more futuristic model that is known as a preventive tool. Before the error takes place, it modifies its budget accordingly so that the negative impact can be minimized. Okay, so feedback and feed forward control system. अब देखिए बेटा, इनमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिस डायग्राम is very take this diagram in your study material as the most important for this particular concept, feedback and feed forward control. देखिए क्या समझा रहा है आपको ये. Basic purpose of budget is that we should control the expenditure and we will maximize the revenue. हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें और हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें. दिस इज द बेसिक पर्पस फॉर सिस्टम बीइंग कंट्रोल. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना. अब इस सिस्टम के द्वारा जो भी आउटपुट हमें मिल रहे हैं, जो भी आउटपुट हमें मिल रहे हैं, इफ दैट आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट doesn't match with the system being controlled budget के साथ वो मैच नहीं करता है, now this system will come into play that is known as feedback information. ये पता लगाएगा कि जो भी बजट, जो भी कंट्रोल वेरिएबल हमारे पास थे, क्या हमारा एक्चुअल आउटपुट उसको मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. इफ इट डजंट मैच इट, then the work of feedback control system will start. It start comparison of actual data and the budgeted data. It thereafter analyzes whether that variance is favorable or adverse, and specifically if it is adverse, whether it is controllable variance or uncontrollable variance. ये अपन पढ़ेंगे बेटा whenever we are starting the standard costing chapter, then this point will arrive there that the variance are of two types, controllable variances and uncontrollable variances. And a proper decision is to be taken so that although the mistake has already been happened in the budgeted year, but the same will not be happen in the future year. This is the work of feedback control system. है ना. इवेंट यहाँ पे हो चुकी है, आउटकम आ चुका है. If the impact is adverse, वो adverse impact आ चुका है. Still we are analyzing and making decision for it, so that the same mistake will not be repeat in the future. Okay, while this is very important, while if there are some factor which are not yet happened, but there is a probability that whatever we have decided in our budget, that will change. The indication are being received towards that event has not actually happened, but the indication are received towards that there are some non-controllable variable that will happen in the next week or the next month. We are getting the indication before that event actually happened. So now if the event is just an indication, that event has not actually happened. Okay, so now the feed forward control system will work. It will compare what is the planned data and what is the revised plan data should be, because based on non-controllable variances, we cannot control that event. If that event happen in the next week or the next month, definitely whatever we have planned for ourselves, that will not be executed. So this feed forward control system will focus on how to minimize the adverse impact of that before that event actually happens. एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं बेटा. एक स्टूडेंट ने अपने लिए बजट बनाया था कि आई हैव टू स्कोर मिनिमम 55 marks in each paper average. Okay, I have to score 440 marks. Okay, he has given the attempt in May 2023. Okay, and when the result was announced in the July 23, he was shocked to get the marking system. 440 उसने expect किया था, but she is not or he is not able to clear the examination. So now
that student will analyze. I'm expecting minimum 440 marks, while I have secured, suppose, unfortunately, 390 marks. So there is a difference of 50 marks. They will compare it. They will analyze where we went wrong based on the suggested answer. That student will bring the copies, certified copies, and then check it with suggested answer and try to find out where he or she went wrong. And then a decision will be taken regarding in which area we want to improve, so that in the next attempt we will be able to clear the chartered accountancy सक्सेसफुली. ओके, ये हुआ बेटा फीड फॉरवर्ड, मतलब गलती आपने कर दिया. नो मॉक टेस्ट पेपर हैज बीन अपीयर्ड by that particular student, neither chapter wise nor the total concept. So directly he appears for the main examination, commits error in that, and once the result is announced, then he is comparing his expectation with the actual mark and then analyzing where he or she went wrong. So this is known as feedback information. While non-controllable variant, what is feed forward information? Suppose you have planned that you have to study this topic for such many hours in the final revision. Now, suppose RTP is released, mock test paper is released. Both the RTP and the mock test paper before your attempt are emphasizing on some particular topic more as compared to the other topic, while that particular topic has not been given due weightage by the student. Okay, so if a particular topic has been more emphasized on RTP, MTP, although your attempt is not started in May 2023, it is somewhere at the end of March or the start of the April month. Your attempt is on May 2023, but based on the paper pattern of RTP and MTP, if you are revising your planning, if you are revising your strategy to clear the examination of May 2023, that is known as feed forward control system. कुछ अगर टॉपिक आपने कवर नहीं किया है and that topic has been covered in RTP and MTP, having a significant coverage in both the publication of the institute, then definitely before your attempt, if you are planning even for that topic also, that is known as feed forward control system. Okay बेटा, समझ में आया पॉइंट आपको? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एरर हो जाने देता है, while feed forward control system में इंडिकेशन हमें मिलते हैं कि whatever we have planned that will not actually happen, there will be some change, है ना. लेकिन वो इवेंट अभी तक नहीं हुए, उस इवेंट के पहले ही जो आप प्लान कर लेते हो so that the adverse impact can be minimized is known as feed forward information. Another example I want to give regarding the feed forward information. जब ये cyclone आता है बेटा, so whether that information comes before that cyclone occurs, yes or no? कम्युनिकेट कीजिए बेटा. जब भी साइक्लोन आता है तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही पता लग जाती है कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, कब आएगा, किस एरिया में आएगा, और इट विल बी डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर दैट साइक्लोन हैज ऑकर्ड? प्लीज कम्युनिकेट बेटा. Okay, very good, beta. Definitely, there is a modern weather forecasting system which forecasts before that event actually happens that there will be cyclone in that particular area. The magnitude will be this. The time भी वहाँ पे पता लग जाता है. What will be the accurate time? So, can you tell me, beta, whether that one is feedback control system or feed forward control system? वो feedback control system है या वो feed forward control system है? Okay, definitely it's a feed forward control system. That cyclone has not yet occurred, but whatever indication we are receiving that there will be cyclone in that particular area, if definitely we can plan before that cyclone happens, then definitely the whatever casualties will be there, that will be minimized. और होता भी यही है बेटा, आप देखते होंगे होता भी यही है कि पहले से तैयारी चालू होती है तो साइक्लोन आता है, there will be damage, but the damage to the human life can be minimized if that information is available beforehand. And even the technology is so forward that it can be estimated even 2 or 3 days before.
है ना। तो वो है, और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ, वो साइक्लोन आ जाएगा, ऑल द कैपेबिलिटीज हैव बीन डन, देन डेफिनेटली वी विल एनालाइज व्हाट फ्यूचर। बेटा इंस्टीट्यूट बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम पेज नंबर 4। एक बार आप रीडिंग लगाएंगे, व्हाट डू मीन बाय फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और यहां तक आपको बेटा एक बार पूरा रीड आउट करना है टिल पेज नंबर 6, पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 में जो आपको कंटेंट दिया है रिगार्डिंग द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, रीड आउट ऑन योर ओन, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट कंटेंट हैज बीन गिवन एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर कॉपी। ओके, चलिए बेटा, समय आपके पास करीबन 4 to 5 मिनट आई एम गिविंग टू यू टू रीड आउट द कंटेंट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल इन पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर रीडिंग विल बी ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉट जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग।
ओके बेटा, हैव यू रीड आउट द कंटेंट? सो देखिए, अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, गिव द हेडिंग इन योर कॉपी बेटा, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. Write down the very first point. It is a reaction. Write down the very first point. It's a reaction after an action has taken place. It's a reaction after an action has taken place. Now, the definition given by the Chartered Institute of Management Accountant is very, very, very important regarding the feedback control system, है ना? तो पहले इस definition को एक बार read out करते हैं, then we will write down this definition. तो क्या define किया है Chartered Institute of Management Accountant ने? It's the measurement, हम measure करते हैं, of differences between planned output, that is the budget, and the actual output achieved. So the first point is, it is the measurement, it's the computation of difference between the budgeted output and the actual output. Not definitely it means output, all the detail related to the budget and all the detail related to the actual. फिर measurement के बाद, and the modification of this word is very, very important. Aft action को आप modify नहीं कर सकते हैं. Modification of subsequent event so that you can achieve future required result. जो पास्ट में गलती हो गई, एरर हो गया, you cannot rectify that error, but you are modifying your future action so that the error committed in the past budgeted year will not be repeated in the future, so that whatever we have planned for the future period, that will be achieved by us. Okay, so लिखिए बेटा, definition given by CIMA, Chartered Institute of Management Accountant. Second point लिखिए, definition given by CIMA. Measurement of differences between budget and actual, measurement of differences between budget and actual, comma, and the modification of subsequent actions, to achieve future required result, results. ओके बेटा, तो देखिए क्या करेगा ये. सबसे पहले जो भी हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जो भी हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, दैट इज द बजट, देन इट विल बी द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशन, वेदर वो एडवर्स है कि फेवरेबल है. Then we will analyze the causes of deviation, whether it's a favorable variance or whether it's an adverse variance. We will analyze the causes of deviation, and then corrective action will be taken so that the same mistake, if it's an adverse variance, the same mistake will not be happen in future. And of course, whatever program we have devised, we will implement that correction program so that we can achieve the future required result. Okay, चलिए. अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटा इसमें, कंट्रोल रिपोर्ट. फीडबैक में ही जो फीडबैक डिवाइस होता है, दे विल प्रिपेयर द कंट्रोल रिपोर्ट, है ना. सिर्फ कंट्रोल रिपोर्ट बना देने से कोई चेंज नहीं आ जाएगा. यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट कंट्रोल रिपोर्ट, देन ओनली देयर विल बी चेंज. तो जब भी आप मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट बनाएगा, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक. तो सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल रिपोर्ट का. जो भी आप फीडबैक रिपोर्ट बना रहे हो या कंट्रोल रिपोर्ट बना रहे हो, वॉट एवर नेम यू कैन कॉल द सेम, इट शुड कंटेन बोथ द अकम्प्लिशमेंट एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली. अगर आपने पीरियड एंड होने के बाद, इफ देयर इज अ कंसिडरेबल टाइम टेकन टू प्रिपेयर द कंट्रोल रिपोर्ट, देन डेफिनेटली even the next budgeted period has already started and already a substantial portion has been left.
सो अगर ये प्रॉम्प्टली आप बनाएंगे तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, कोई ट्रेंड है या कोई रिलेशनशिप है, जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका एडवर्स आ रहा है ना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज एडवर्स while material price variance is favorable. Can you please establish the relationship? Because मटेरियल से रिलेटेड एक वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, मटेरियल से रिलेटेड एक वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है. So can any relationship can be established between these two variants? Why one variance is adverse related to material and why the other is a favorable one? चलिए बेटा एक बार आप ट्राई करके देखिए, मुझे बता सकते हैं कोई रिलेशनशिप इसमें जो मुझे इंडिकेट करेगा कि यस दिस माइट बी द रीजन why your material usage variance is adverse because your material price variance is favorable. कोई का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं आप इन दोनों में? वेरी गुड बेटा फीमा सुरेश, करेक्ट आंसर है. देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दैट we have used the cheaper quality of raw material, so therefore we have purchased it at a less price, so material price variance is favorable, but since it's a cheaper quality of raw material, low quality of raw material, therefore more materials are required to produce the finished goods, therefore material usage variance is adverse. तो जो भी कंट्रोल रिपोर्ट है सिंपली आपको डिस्क्लोज नहीं करना है कि दिस इज एडवर्स, दिस इज फेवरेबल. इफ यू कैन एस्टेब्लिश अ ट्रेंड और रिलेशनशिप, डेफिनेटली यू शुड आल्सो एस्टेब्लिश दैट वन. एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक रिपोर्ट शुड बी इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट. स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट क्यों होता है बेटा? व्हेनेवर यू रीड द न्यूज़पेपर contain n number of detail, but all the detail are not relevant to me. Suppose if I want to take the local detail, then I directly go to that page because I am used to that newspaper. If I want to read the sports news, then I directly go to that page. So जो भी आपका format है, that should be standardized, will continue from year to year, so that the management can check directly what they want to check from that particular point. क्योंकि उस कंट्रोल रिपोर्ट को उन्हें पढ़ के कई सालों हो चुके हैं, so definitely they are accustomed to that. So अगर उनके काम की चीज उन्हें पता है कहां मिलेगी, so directly they will jump to that particular page. So it should be in standardized format, है ना. अब इसके कुछ लिमिटेशन है, दो लिमिटेशन है. सबसे पहला लिमिटेशन है, इट डिपेंड्स हेवीली ऑन सक्सेस ऑफ एरर डिटेक्शन सिस्टम. अगर आप एरर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई योर सब्सिक्वेंट प्लान टू अचीव द फ्यूचर रिक्वायर्ड रिजल्ट. और सेकेंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लैग होता है. इट मींस टाइम डिफरेंस बिटवीन एरर डिटेक्शन, कब आप उस एरर को पकड़ पाते हैं आफ्टर द पीरियड हैज बीन ओवर. एरर कंफर्मेशन, कोई दूसरा अप्रूवल देता है कि यस दिस एरर हैज बीन कंफर्म फ्रॉम देयर एंड. एंड एरर रिवीजन द सब्सिक्वेंट प्लान. सो अगर इन तीनों में अच्छा खासा टाइम गैप है, तो जो आपका नेक्स्ट बजट पीरियड था ऑलरेडी दैट हैज बीन स्टार्टेड एंड द कंसिडरेबल टाइम हैज ऑलरेडी बीन लैप्स्ड, है ना. तो लिखिए बेटा थर्ड पॉइंट, लिमिटेशन. लिमिटेशन इसमें लिखिए पहला पॉइंट, द सक्सेस ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, द सक्सेस ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम is dependent on error detection system. और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा, टाइम लैग बिटवीन द एरर डिटेक्शन, एरर कंफर्मेशन एंड एरर रिवीजन, जब तक हमारा एक्चुअल रिजल्ट नेक्स्ट बजट पीरियड का ऑलरेडी चेंज. टाइम लैग बिटवीन द एरर डिटेक्शन, एरर कंफर्मेशन एंड एरर रिवीजन.
ओके, चलिए बेटा, अब मैं आपको समय देता हूं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए। इसमें कंपेरेटिवली थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम आपको 2 पेजेस में दिया हुआ है। इन पेज नंबर 6 and 7, read out the content of feed forward control system. Some extra time I will provide to you, approximately 4 to 6 minutes. I am giving to you to interpret, not just read out, interpret the feed forward control system given in the study material. ठीक है बेटा, चलिए टाइम लीजिए आप। Last 1 or 2 minutes available with you, beta. Try to interpret it very properly because it's altogether a new system. Feed forward control system. Feedback, you have heard it many a time, so it will be comparatively easy to interpret. Feed forward is something unique. Na? All examples have been given in the study material. Also try to interpret those examples.
If you are done with the reading beta interpretation, then please communicate to me so that we can start discussing the feed forward control system. ओके बेटा, सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं सीआईएमए की जो डेफिनेशन दी गई थी इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और जो सीआईएमए की डेफिनेशन दी गई है रिगार्डिंग द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बेसिक वर्ड का, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा व्हाट इज दैट बिगेस्ट डिफरेंस इन द वर्ड यूज्ड while providing the definition for feedback control and while providing the definition for feed forward control? ये तो ठीक है सब बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट, ये तो नॉर्मल पॉइंट है बेटा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट आर नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वर्ड का सिलेक्शन देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्शन। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताइए वो कौन सा वर्ड है जो डिफरेंशिएट करता है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन गिवन बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एंड दैट वर्ड इज, यहां पे उन्होंने मेजरमेंट वर्ड यूज किया है while giving the definition of feedback control system they have used the word measurement of differences, क्योंकि यहां पे हम एक्चुअली हमारे पास बजटेड डेटा भी है, एक्चुअली हमारे पास एक्चुअल डेटा भी है, सो वी कैन एक्चुअली मेजर द डिफरेंस। while in case of feed forward control system we are not having the actual data, so therefore यहां पे जो वर्ड यूज किया है that word is the forecasting। अभी वो इवेंट हुई नहीं है, so how can we measure? Just we can forecast what would be the difference between actual and the planned outcome। यहाँ पे एक्चुअल का मतलब है अगर वो इवेंट हो जाएगी तो क्या आउटकम आएगा, एंड जो हमने इवेंट सोच रखा था रिगार्डिंग द बजट। सो यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप थ्योरेटिकल कंटेंट लिख रहे हैं यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजीज। यू जब आप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में लिखेंगे then you will use the word measurement, while when you are providing detail on feed forward control system you will use the word forecasting, क्योंकि हम अभी measure ही नहीं कर पाएंगे because that event has not actually happened, है ना? लिखिए बेटा पहला पॉइंट लिखिए, it is a reaction, it is a reaction, पहला पॉइंट, it is a reaction before the event actually taken place। It's a reaction before the event has actually taken place। सेकेंड पॉइंट लिखे, CIMA definition, forecasting of differences, forecasting of differences between actual and planned outcome, forecasting of differences between actual and planned outcomes
and the implementation of action before such event, and the implementation of actions before the event, comma, so as to avoid such difference, so as to avoid such difference. लेकिन इसके भी बेटा अपने कुछ लिमिटेशन है ना? तो थर्ड पॉइंट लिखिए, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो लिखिए बेटा, इट इज कंसर्न विथ the estimate of uncertain future event. It is concerned with the estimation of uncertain future event. Second point लिख दीजिए, सिंपल पॉइंट है, स्टडी ऑफ फ्यूचर इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड. स्टडी ऑफ फ्यूचर इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड. फ्यूचर को कैसे पढ़ा जाए, इसका आज भी कोई प्रॉपर साइंटिफिक वे नहीं है. ओके बेटा, चलिए अब एक इसके ऊपर केस सिनेरियो है. लेट्स रीड आउट दोस केस सिनेरियो एंड देन वी विल मूव टू सम अदर टॉपिक, है ना. ब्रेक आज थोड़ा सा लेट लेंगे बेटा, समवेयर नियर बिटवीन 7:45 to 7:50 we will take the break. So let's start the case scenario given in page number 8 related to the concept feedback control system and feed forward control system. Okay, चलिए देखिए, I'm in page number 8. Real Petroleum Corporation manufacture lubricant oil for motor vehicles, two-wheeler, four-wheeler and heavy vehicle. So the name of my client is Real Petroleum Corporation. They are in the manufacturing of lubricating oil for all types of vehicles. The company offers lubricant oil in various packages ranging from 100 ml pouch to a 200 liters drum. जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं बेटा, वो जनरली बिगर पैकिंग परचेज करते हैं. सो 100 ml से लेकर 200 लीटर्स तक के हमारे पास ड्रम है. About 70% of lubricant sale comprise are made in the form of 900 ml cans, जो जनरली टू व्हीलर में लगता है इंजन ऑयल. सो हमारी 70% सेल belongs to that 900 ml can. The process of manufacturing and packaging lubricant oil are given below. ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, because although it appears in the very first reading that it is not relevant, but basically it is relevant whenever you are trying to provide the answer whatever has been asked in the requirement part. Okay, so first of all, base oil of required grade is imported from the Middle East. Indirectly we are importing the raw material required for manufacturing the lubricating oil. Then the base oil is blended with additives at the manufacturing plant at a specified temperature to produce the lubricating oil. Okay, normal point hai. The oil is stored for a day to bring the temperature to normal. Again, this is not related to us, this point, क्योंकि technical point हो गया. Okay, यहां से हमारे लिए काम आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा ना, जब आप requirement part पढ़ेंगे, then this detail are important. The plant has an automated bottling facility. The operator is required to preset the quantity and the number of cans to be filled in a computerized system. No manual intervention is required thereafter. आपको 100 ml पाउच में चाहिए, 900 ml पाउच में चाहिए और बड़ी पैकेजिंग चाहिए, जस्ट आपको कंप्यूटराइज सिस्टम में फीड अप करना होता है कि कितने ml पैकिंग आपको चाहिए एंड द क्वांटिटी ऑफ इट. सपोज आई रिक्वायर 5900 ml बॉटल, तो मैं सिस्टम में फीड अप करूंगा 900 ml का मुझे पैकेजिंग साइज चाहिए और क्वांटिटी मुझे चाहिए 5000. ओके, द प्रोडक्ट इज फिल्ड इन कैन्स एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ पैकेजिंग विथ 900 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो जो कैन होता है, कंटेनर आप बोल दीजिए, उसमें फिलअप कर दिया जाएगा 900 ml. फिर कैप आर फिक्स्ड ऑन द कैन एंड सील्ड एट द सेकेंड स्टेज ऑफ पैकेजिंग. तो सबसे पहली स्टेज हमारी पैकेजिंग की है, हम उस ऑयल को कैन में सील करते हैं. सेकेंड स्टेज इज हम उस पर कैप लगा देते हैं
And the third stage is now the product is weighed at the third stage of packaging before the cans are packed into the carton. So जो पैकेजिंग वाली स्टेज है वो हमारी 3 स्टेज है. सबसे पहले हम ऑयल को कैन में फिल करते हैं, सेकेंड हम उसका कैप लगाते हैं, एंड द थर्ड वन आफ्टर द कैप we will wait in the last step of the packaging. Any can having lesser quantity of oil if removed before the cans are packed into the carton. जब हम वेट थर्ड स्टेज में जब उसको मेजर कर रहे हैं, so if we came to know that a particular can is not carrying the desired quantity of 900 ml, तो हम उसको कार्टन में पैक नहीं करते हैं. जो भी कैन शॉर्ट फिल्ड है वो कैन नॉट बी रीयूज्ड, ऑल्दो इट्स नॉट लॉजिकल कि हम उसको क्यों नहीं यूज कर पाएंगे, बट जो क्वेश्चन ने बोला है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन. सो जो भी कैन अंडरवेट पाई जाती है एज कंपेयर टू द डेजिग्नेटेड वेट, वो हम उसको रीयूज नहीं कर सकते. वंस द सील इज ब्रोकन द कैन इज ऑफ नो यूज, मतलब कंप्लीट हमारे लिए वो लॉस कहलाएगा. देयर इज नो प्रोसेस बाय विच द ऑयल इन शॉर्ट फिल्ड कैन बी रीयूज, हेंस द प्रोडक्ट इज वेस्टेड. तो ध्यान ला पाए designated quantity में. Now the company is considering a proposal to add a component in its packaging unit to avoid losses arising out of quantity issues in packaging. है ना. अब कंपनी एक प्रपोजल ला रही है अपने पैकेजिंग यूनिट में ताकि जो भी लॉस होता है ड्यू टू द क्वांटिटी इशू दैट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड. The component will be installed after the first stage of packaging. What is the first stage of packaging? The first stage of packaging is filling the oil in the container. This is the first stage of packaging. उसके बाद अब आप एक component ला रहे हो. This component will measure the volume of product and will forward the can for capping and filling only if the quantity of the can is correct. Second stage में directly हम पहले कैप लगा देते थे, उसके बाद हम वेट करते थे, जबकि अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में वी विल इंसर प्योर ऑयल इनटू दैट कंटेनर, आफ्टर दैट वी विल फर्स्ट वेट इट एंड देन अगर कुछ भी उसमें इश्यू आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही हम उसको सेकेंड स्टेज में भेजेंगे फॉर फिलिंग एंड कैपिंग. इन केस द कैन डजंट हैव द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, द कैन विल बी टॉप्ड अप विद द बैलेंस प्रोडक्ट बिफोर द कैपिंग एंड फिलिंग प्रोसेस. सो बेसिकली उन्होंने स्टेप नंबर 1 और 2 में एक नई स्टेप ला दिया, जो स्टेप नंबर 3 थी उसको उन्होंने इंसर्ट कर दिया आफ्टर स्टेप नंबर 1. इन स्टेप नंबर 1 वी विल डू द ऑयल विल बी poured into the container. In the second stage we will wait, और कहीं भी उसमें वेट मिसमैच होता है then we can rectify the same. And the third stage will be the capping and filling वाली हमारी लास्ट स्टेज होगी, जिसके कारण हमारा कोई भी ऑयल वेस्ट नहीं हो रहा है. ओके, there will be, the company will be able to achieve zero wastage due to the short filling after implementation of this new system. Using the context of control system, identify and explain the type of control which is existing in the company and the type of control which is proposed. Okay, beta. So the most important point I think from this particular question is not the solution part. वो तो बहुत easy है बेटा. Just we have learned the topic feedback control system and feed forward control system. Okay. After that, we are starting a case scenario. So in your mind, you're not thinking the question that how this question will be identified in the examination as related to feedback and feed forward control system. कहीं भी पूरे question में nowhere in the question they have mentioned the name of feedback and feed forward control system. है ना, जबकि क्वेश्चन फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम का है. तो जल्दी से आप मुझे बताइए बेटा, आई एम गिविंग यू टाइम. अगर आपको रीड आउट करना है एक और बार क्वेश्चन, आप रीड आउट कर लीजिए. आई एम गिविंग यू 2 or 3 minutes टाइम टू कम्युनिकेट टू मी हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज रिलेटेड टू फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड. अगर एक क्वेश्चन में नहीं भी पूछता ना बेटा, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, बट
I know that the real problem will arise when such type of question appears in the examination with nowhere it was mentioned that the question relate to feedback or feed forward. Then how my student will identify that yes, we have to apply the concept of feedback and feed forward. That's why I'm asking this very, very important question. Solution important नहीं है, important ये है कैसे हम identify करेंगे. If you want the time for reading the question once again, you can take it, beta. There is no issue, but I want the answer. How a student will identify that this question relates to feedback and feed forward. No, beta, Fima Suresh, that will not be the identification. Geeta Patel, beta, I will accept your answer based on 2 words. Okay. You provided me, I think, 7 to 8 words. Based on 7 to 8 words, you have given me 2 important words based on which I will accept your answer. Can you please identify those 2 words, beta, whatever language you have been used? Out of that, only 2 words are indicating that yes, this question relates to feedback and feed forward control system. No, beta, Fima Suresh, I am asking a altogether different question. How in the examination you will identify that this question relates to feedback and feed forward? That's the most important question rather than the solution of the question. Okay, beta, the most important words are the control system. Very good, Aniket Jain and Geeta Patel. Very good, beta. And Bhumi have also provided me the answer that the control system, this word is very, very, very important. This is the words on which we can definitely apply the concept feedback and feed forward control system, है ना? तो जो पूरे आपके सिलेबस में what is good in this syllabus बेटा, if a particular topic has been taught in a particular chapter, that will apply to the rest of the chapter. पूरे आपके सिलेबस में you have not heard this word control system.
This is for the very first time this word has been used. So in the examination, if the paper setter uses this word control system, then definitely you have to apply the concept of feedback and feed forward control system, because for we are having only two types of control system. The first one is related with feedback control system and the other one is feed forward control system, है ना? तब एक काम कीजिए बेटा, सो जो एग्जिस्टिंग वाला है वो तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, जैसे फीड बैक और फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, बिकॉज ऑलरेडी हमने वो एरर हो चुका है, हम बाद में उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं. एंड द रिवाइज वन इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. बिफोर दैट इवेंट एक्चुअली ओपन, वी आर टेकिंग एक्शन सो दैट द एरर कैन बी मिनिमाइज्ड और रेक्टिफाइड फुल्ली. ओके, सो एक बार बेटा इसका आप पूरा पैटर्न देखिए. आपको सॉल्यूशन पढ़ना नहीं है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सॉल्यूशन का आर्ट ऑफ राइटिंग देखना है. उन्होंने हमें दो वर्ड यूज किया है. सबसे पहले उन्होंने बोला आइडेंटिफाई कीजिए, तो चेक कीजिएगा क्या हमने आइडेंटिफाई किया है इन द सॉल्यूशन, वेदर इट हैज बीन गिवन दैट हाउ वी हैव आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड द फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, whether that is feedback or feed forward. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में they have given us 2 or 3 line, and after that the remaining 7 to 8 line have been given to each system regarding the explanation part of feedback and feed forward control system, है ना? तो एक बार आप सॉल्यूशन को पढ़ना नहीं है, आपको ये देखना है कि जो उन्होंने दो वर्ब यूज किया है, how they have effectively utilized that two verbs while drafting the answer, है ना? तो मैं कंप्लीट 5 मिनट्स आपको दे रहा हूं बेटा to read out the solution part of this particular question. Okay, चलिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक.
चलिए बेटा, हैव यू रीड आउट द सेम? तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि क्या उन्होंने वो लिख रहे हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन व्हाट द रीजनिंग दे आर गिवन, एंड फॉर एक्सप्लेनेशन व्हाट द रीजनिंग दे आर गिवन। ठीक है बेटा, तो चलिए ब्रेक के बाद बेटा फिर ये हुआ आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेक के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, बिहेवियरल एक्सपेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, है ना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक है फॉर द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, कि कैसे हम अपने एम्प्लॉइज को एट द टाइम मोटिवेट भी करें और उनका परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करें। अ वेरी गुड टॉपिक, एंड द टॉपिक रिक्वायर्ड इन नाउ डे इज द सेकेंड टॉपिक, बिहेवियरल एक्सपेक्ट। और फिर इन द लास्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ बजटिंग, दैट इज द बियॉन्ड बजटिंग कंसेप्ट, है ना। तो ब्रेक लेते हैं बेटा। नाउ इट्स 1947, वी विल मीट शार्प एट 8:02, 8:02 में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ब्रेक इज टिल 8:02, 8:02 तक ब्रेक है आपके पास।
Okay, beta. So let's start the second topic of this particular chapter number 10, budgetary control. Please give the heading in your copy, behavioral aspect of budgetary control. Behavioral aspect of budgetary control. Please give the heading in your copy, beta. Behavioral aspect of budgetary control. What we will study in this topic, if the employee concerned are given the authority to prepare their own budget, then what behavioral changes will occur in their attitude towards the achievement of the organizational goal? If the budget is prepared by the strategic level of management and just they have been passed on to the operational and tactical level of management, then what behavioral change it will happen? Because at the end of the day, the performance of the employees will be judged based on the actual performance and the comparison with the budgeted performance. So अगर उस point of time पर अगर whatever error they have committed, if we point out that error to them, then what will be the psychological behavioral changes to them? अगर हम बजट का लेवल बहुत टफ कर देते हैं, so then what will be the behavioral change? So this topic is full to about the human psychology कि बजट का लेवल हमें कम रखना है, ज्यादा रखना है, बजट उन्हें बनाने देना है और अप्रूव हमें करना है, या बजट हम बनाएंगे, अप्रूव भी हम करेंगे, एंड देन एम्प्लॉइज आर टू फॉलो दैट बजट. क्या करना चाहिए, किसका क्या पॉजिटिव बिहेवियरल इंपैक्ट जाता है, ऑल दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल. ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहला वर्ड, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस. लिखिए बेटा, आप हेडिंग दीजिए. अब इसमें पहला टॉपिक लिखिए, इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस. इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस. स्टार्ट करना चाहूंगा बेटा ये टॉपिक से. मान के चलिए, सपोज T20 match is going on between India and Australia. Okay, so Australia has batted first. They have given the target of 185 runs in a T20 match. Okay, what you see, beta, whether that target will be an achievable one, whether Indian team will be able to successfully chase that one? Yes, because 185 is neither an easy target nor too tough target. It's a challenging target. है ना, चैलेंजिंग टारगेट है, बिकॉज 9 के रन रेट से अगर आपको कंटिन्यूअसली स्कोर करना है फॉर 20 आवर्स, देन डेफिनेटली इट्स अ चैलेंजिंग टारगेट, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स द टीम चेजिंग सेकंड हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द टारगेट. बट सपोज द Australian team has got out within 110 runs, so the target will be 111 runs. And other case, the Australian team have given the target of 221 runs. अभी एक्सट्रीम बात कर रहा हूं बेटा. 150 to 185 इज द नॉर्मल टारगेट. 150 हम इजी मान सकते हैं, है ना, और 185 हम उसको चैलेंजिंग मान सकते हैं, बट अचीवेबल वन है. लेकिन वही टारगेट अगर मैं बहुत लो कर देता हूं, सपोज 110 कर देता हूं, या उस टारगेट को मैं 221 कर देता हूं, तो भी प्रॉब्लम है. Many a times you have seen that even the team batting second are not able to score the 110 run. अभी recent हुआ है बेटा, if you are interested in the cricket, जो इंडिया बांग्लादेश का लास्ट जो अपना टेस्ट मैच हुआ था, in the second inning I think the chasing target is very low, है ना, so hardly it is 150 to 170, I don't remember the accurate number, but it is on the lower side, and उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ गई. So if the target is too easy, then also there is a problem, because there is no motivational level to achieve that one. जितने भी बड़े बड़े प्लेयर है वो बहुत कैजुअल शॉट्स खेलते हैं, क्रिटिकल शॉट, एंड दे गेट आउट. एंड इवन इफ द टारगेट इज टू डिफिकल्ट, सपोज 221 रन का टारगेट दिया है, सो इट इज क्वाइट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कंप्लीट सेकंड बैटिंग टीम विल बी आउट, ऑल आउट विद इन 100 and 120 30 रन. सो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे वो ये है कि जो टारगेट है, that should not be too difficult, neither it should be easy. The target should be a real
challenging one, है ना? There is a thin demarcation between the challenging target and the two difficult target. तो जो challenging target है, that will produce the most efficiency, while the too difficult target is not at all to be considered in today's environment, है ना? तो यहां पे यही टॉपिक हमें बताया गया है बेटा कि जब भी आप बजट बनाएंगे, व्हाट विल बी द बजट डिफिकल्टी लेवल. अगर वो बजट डिफिकल्टी लेवल टू इजी है तो भी वो हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा. इफ द बजट डिफिकल्टी लेवल इज टू हाई, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो भी वो मोटिवेट नहीं करेगा. व्हाट मोटिवेट द एम्प्लॉय इज द चैलेंजिंग टास्क. मतलब जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके नेक्स्ट स्टेप तक का आप उसे टारगेट दे सकते हैं. सो इट विल बी अ चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग वन टू दो स्किल्ड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय, एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू अचीव देम इन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? तो एक बार आप ये रीड आउट कीजिए बेटा, है ना? इट इज गिवन इन पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 में यहां तक आप पढ़िए बस, सिर्फ इनिशियल 2 पॉइंट्स यहां तक आपको पढ़ना है. पेज नंबर 10 की डिटेल आपको पढ़ना, पेज नंबर 11 में सिर्फ ये 2 डिटेल अभी आपको पढ़ना है फॉर द टाइम बीइंग, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट टू अस, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ बजट डिफिकल्टी. ओके, चलिए टाइम है बेटा आपके पास, एक बार आप कोशिश कीजिए. ओके बेटा, पढ़ा आपने? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, बजट में कोई भी मोटिवेशनल लेवल नहीं होता है unless and until that budget has been accepted by the manager involved as their own personal target. Now the question arises for how the manager should consider the budget as their own personal target. Later on we will discuss beta, there are 2 methods of budgeting, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, है ना? तो उसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि कब वो बजट को अपना पर्सनल टारगेट मानते हैं. बट वन थिंग इज कंफर्म, अगर मैनेजर्स को मोटिवेट रखना है सो देन डेफिनेटली मैनेजर्स को इस तरीके से हमें मोटिवेट करना पड़ेगा सो दैट दे कैन कीप द ऑर्गेनाइजेशनल बजट एज देयर ओन पर्सनल बजट, है ना? सो हमें बजट का डिफिकल्टी लेवल कहां तक बढ़ाना है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. हमें बजट का डिफिकल्टी लेवल उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल के बाद अब बजट एक्सेप्ट नहीं होगा. सो वी हैव टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आफ्टर दैट द बजट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल.
till that point the budget will be known as the challenging one. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. The more demanding the target, the better the result achieved. Easy नहीं होना चाहिए, too difficult नहीं होना चाहिए. It should be a demanding target, है ना. फिर demanding budget are seen as more relevant than less difficult budget, but negative attitudes will develop if they are seen to be too difficult. I already given you the example. You less difficult target, it means second beginning team is chasing a target of 110, and negative attitude when they are chasing a target of 221 in a T20 match. So that should be a demanding one. 150 is a achievable one, but अगर उससे ज्यादा होता है तो वो demanding होता है. ठीक है. फिर बोला है बजट तभी एक्सेप्ट होता है when there is a good upward communication. बजट को एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशनल लेवल, है ना. इफ ऑपरेशनल लेवल इज इजीली एबल टू कम्युनिकेट इट्स प्रॉब्लम, इट इश्यूज with the tactical level, then definitely that acceptance of budget will increase there, है ना. और फिर अब मैनेजर कैसे रिएक्ट करता है ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी ऑफ द मैनेजर एंड ऑल्सो द कल्चर दैट इज प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. लिखिए बेटा, लिखिए इस बारे में. Write down the first point. When managers consider the organizational budget, when manager consider the organizational budget as their own personal target, as their own personal target, comma, then only the budget acceptance will be there. Then only the budget acceptance will be there. इसी पहले पॉइंट में लिखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन में, पहला ही पॉइंट चल रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए. Also there should be good upward communication. Also there should be good upward communication. है ना. सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट राइट डाउन. सेकेंड पॉइंट, the more demanding the target is, the more demanding the target is, comma, the better will be the result achieved. Better will be the result achieved. इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, if the budget is seen to be too difficult, if the budget is seen to be too difficult, comma, then negative attitudes can develop. Then negative attitudes can develop in the manager's behavior. Then negative attitudes can develop in the manager's behavior.
ओके बेटा, अब ये डायग्राम देखिए, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, दिस इज द इजी लेवल, दिस इज द बजट डिफिकल्टी, थोड़ा मॉडरेट है और ये डिफिकल्ट हो गया, दिस इज द परफॉर्मेंस। अगर हम बजट लेवल इजी रखते हैं देन द परफॉर्मेंस विल बी नॉर्मल वन। जैसे जैसे हम बजट डिफिकल्टी बढ़ाते जाते आप देखिए द परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो लेवल है दिस इज द लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें उस पॉइंट तक बजट डिफिकल्टी को बढ़ाते चलना है जिस पॉइंट के बाद दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू डिफिकल्ट। जैसे ही आप बजट डिफिकल्टी इस लेवल के बाद बढ़ाते हैं then definitely the performance will not be stable but it will be going down. The best example is I have given that if the target of chasing the second betting team is of 221 runs in a T20 match, then definitely it is quite possible that the whole team will out within 100 and 120 runs. तो बल्कि परफॉर्मेंस बढ़ता नहीं है, परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो जाता है if the budget seem to be too difficult, है ना। देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, budget level that motivates the best level of performance may not be achievable. हम ये मानते हैं कि ये might not be achievable, but in contrast the budget that is expected to be achieved motivates a lower level of performance as manager no longer aspire to meet the budget target. तो बल्कि अगर वहां पे लो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिमांड करता है वो बजट, तो हो सकता है कि वो बजट रिटेन ही हम ना कर पाए, मैनेजर को कोई एंथुसियाज्म ही नहीं रहेगा। So always we would prefer that the budget should be on the demanding level, the challenging level. Neither it should be easy one, neither it should be too difficult one. ठीक है बेटा, चलिए अब एक बार आप एक क्वेश्चन पढ़िए बेटा। केस सिनेरियो हैज बीन गिवन टू यू, just have a newspaper reading, then we will discuss this question combinedly beta na. Just have a newspaper reading of this case scenario. I'm giving you only 3 minutes for a newspaper reading. You don't have to interpret this case scenario, just newspaper reading is enough. Okay beta, hope you read out the question. Now we will interpret this one. चलिए बेटा start करते हैं। It's frustrating working with denial. ये कौन कह रहा है? A manager of the machine shop, Mr. Singh, है ना। उसका स्टेटमेंट है कि जो मिस्टर डिनायल है, it's frustrating working with the denial. Denial is very dominant and expect everything to be done his way. The statement was given by the manager of the machine shop, Mr. Singh, that it's not proper to work with Mr. Denial. वो बहुत dominant है
and expect that each and everything is to be done according to him. We have done more and better work to get up to budget. हमने बहुत मेहनत किया है to achieve more and more whatever have been communicated in the budget, but the minute we make it, he tightens the budget on us. जैसे लास्ट ईयर हमने मान के चलिए 10,000 मशीन आवर्स प्रोड्यूस किया था. In the current year, we have been given the target to produce 12,000 machine hour. It's a demanding one. It's a challenging one. But still, we have achieved the feat. लेकिन जैसे ही हमने 12,000 machine hour achieve किया, instantly Mr. Denial has further revised the target to say 15,000. है ना? Cannot work any faster and still maintain quality. This is the words of Mr. Singh, manager of the machine shop. We always seem to be interrupting the big job for those small rush order. जो भी बड़े जॉब है उसको होल्ड करके पहले जो रश ऑर्डर थे उसको कंप्लीट करते as per the instruction given by Mr. Nail. The accountant seems to know everything happening in my department, something even before I do. तो ये जहां तक अकाउंटेंट होना चाहिए बेटा उसको सब चीज हमारे डिपार्टमेंट की पता है. मतलब इंटरफेरेंस बहुत है ना कहने का मतलब. I thought all that budget and accounting stuff was supposed to help, but it gets me into the trouble. I'm trying to put quality work. They are trying to save money. This is a dead-end job. I don't see much of a future here. This is the statement given by Mr. Singh, manager. बहुत frustrated है किससे? Denial, who is the accountant, who is preparing the budget. जैसे ही वो बजट का लेवल हम अचीव कर लेते हैं, he further tighten. वो बार-बार कोशिश करते हैं accounting team to save money while my focus is on quality work. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस्टर सिंह जो मैनेजर है मशीन का जिसने वो कंप्लेन किया है इन द प्रीवियस पैरा हैज जस्ट अटेंडेड द मंथली कॉन्फ्रेंस इवैल्यूएशन मीटिंग फॉर प्लांट डिपार्टमेंट हेड. है ना, ये स्टेटमेंट उसने जो मीटिंग हेल्ड हुई थी इनकी प्लांट डिपार्टमेंटल हेड की उसमें बोला है. दिस मीटिंग हैड बीन हेल्ड ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ ईच मंथ. मिस्टर डिनायल MBA from Manchester University has joined the Indian operation a year earlier. तो Mr. Denial है MBA है from the Manchester. अभी इसने Indian operation join किया 1 year before. Mr. Singh has just been given the worst evaluation he had ever received in his long career with the company. इसके आने के बाद जो इसको evaluation हुआ है Mr. Singh का, that has been the worst evaluation since his long career. He was the respected of the experienced machinist in the company, Mr. Singh. Old plant manager have often stated that company success was due to the high quality of the work of machinist like Mr. Singh. In the previous, Mr. Singh was regarded as the pioneer of high quality work and many old plant managers have recognized this. But here's some issue with this newly appointed accountant, Mr. Denial. Okay. He had been with global manufacturing company for many years and was promoted to supervisor of the machine shop when the company expanded and moved to its present location. सालों से ये कंपनी में वर्क कर रहा है. As supervisor, Mr. Singh stressed the importance of craftsmanship and told his worker that he wanted no careless work coming from his department. ये इसका व्यू बताया कि Mr. Singh is in the organization since many years. He is known for his quality work. फिर उसको प्रमोट भी किया गया एज अ सुपरवाइजर एंड ऑलवेज ही टोल्ड हिज वर्कमैन क्राफ्टमैन दैट नो केयरलेस वर्क शुड बी एक्सेप्टेड इन हिज प्लांट मशीन डिपार्टमेंट. ओके, अब मिस्टर डिनायल के बारे में बता रहा है. व्हेन मिस्टर डिनायल बिकम द प्लांट मैनेजर he directed that monthly performance comparison be made between actual and budgeted cost for each department. इसमें कोई बुराई भी नहीं है बेटा, है ना. जब ये प्लांट मैनेजर बना और मिस्टर सिंह कौन है, सुपरवाइजर है ना. सो मिस्टर डिनायल ने बोला कि हमें हर महीने कंपैरिजन करना चाहिए हमारी बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट का. द डिपार्टमेंटल बजट वर इंटेंडेड टू एनकरेज द सुपरवाइजर टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी एंड टू सीक कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज. ये भी सही है, कहीं गलत नहीं है. द कंपनी कंट्रोलर वाज इंस्ट्रक्टेड टू हैव हिज स्टाफ टाइटन द बजट slightly whenever a department attained its budget in a given month. This was done to reinforce the plant supervisor to reduce the cost. तो कंट्रोलर बोलता है कंपनी का जैसे ही हमारा एम्प्लॉय सुपरवाइजर टारगेट अचीव कर देता है
फर्दर उसको टाइटन अप कर दो, मतलब और चैलेंजिंग कर दो, ताकि कंपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पाए। जो मिस्टर डिनायल है, जो प्लांट मैनेजर अभी अभी बना है, ऑफन स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग द बजट. He has also made it known that he kept a file of this performance report for future reference. तो आपको बताना बेटा पूरा क्वेश्चन साइकोलॉजी के ऊपर है कि जो बंदा सालों से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, नोन फॉर इट्स बेटर क्वालिटी वर्क, मिस्टर सिंह, अब वो मिस्टर डिनायल के आने के बाद जो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, बिकॉज द थिंकिंग ऑफ बोथ द पर्सन आर टोटली डिफरेंट. तो आपको बताना है व्हाट आर द प्रॉब्लम which appears to exist in a budgetary control system and how this budgetary control system can be revised to improve the effectiveness. तो वापस पढ़िए बेटा एक और बार आप रिक्वायरमेंट पार्ट, रीड आउट द रिक्वायरमेंट पार्ट वंस अगेन बेटा. रिक्वायरमेंट पार्ट हमें बोल रहा है कि हमें दो चीजें बताना है. सबसे पहले बताना है क्या एग्जिस्टिंग बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हमें प्रॉब्लम्स है वो बताना है, और फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी इफेक्टिवनेस बढ़े. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने तीन चीजें दिया है. सबसे पहली प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटेड गोल नहीं है, जो हमने सीखा था इन चैप्टर परफॉर्मेंस मेजरमेंट की गोल कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल कॉन्ग्रुएंट टारगेट होता है. उनपे जितने डिपार्टमेंट है, जितने मैनेजर्स है, ईच एंड एवरी मैनेजर हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. फिर जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जैसे रश ऑर्डर है, उसके कारण जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो, एंड शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव है, कंपनी कोशिश कर रही है कि कॉस्ट बचे व्हाइल मिस्टर सिंह इज एम्फसाइजिंग ऑन हाई क्वालिटी वर्क. तो यहाँ पे शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव ना होके हमें लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा. तो एक का सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए जल्दी से. आई एम गिविंग यू 5 minutes ऑफ टाइम टू रीड आउट दिस सॉल्यूशन. ओके, चलिए और इंटरप्रेट कीजिए प्रॉपर, है ना. और रिक्वायरमेंट पार्ट है आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड लेटर ऑन you have to provide the resolution so that such problem can be rectified, so that performance can be improved. ओके बेटा, हैव यू रीड आउट द सेम? कोई इश्यू इसमें? तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड द सजेशन. ओके बेटा, चलिए
सो द सेशन बेटा थोड़ा जल्दी मैं एंड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, आई हैव टू कैच द फ्लाइट टू माय होम टाउन, राइट नाउ आई एम इन चेन्नई, है ना। तो चेन्नई से मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट लेना है दिल्ली का, फिर दिल्ली से मैं अपने होम टाउन पहुंचूंगा बेटा। और सो वी विल वाइंड अप द सेशन टुडे राइट नाउ बेटा, एंड from the next in the next session beta we cover more aspects. If there are, what is the approach, we are having two approach, that is the top down approach and the bottom up approach. What are the advantages and disadvantages of that? And the most important topic we will discuss in the next session is altogether a new topic to many of us, that is the beyond budgeting concept, है ना। तो ठीक है बेटा, चलिए। So right now I'm winding this session with this particular topic of effect of budget difficulty level on performance. In the next session we will complete this particular chapter. It's a comparatively easy chapter and very scoring chapter from examination viewpoint. Okay, chaliye beta, please take care of yourself. Thanks a lot.